Well, so graphs of motion है, what we need to understand is we have different quantities to be plotted on the graph. সবথেকে বেশি ইউজ হয় যেটা সেটা হচ্ছে VT গ্রাফ, velocity versus so if you get a VT graph of a certain shape, obviously it says a what type of motion? Uniformly accelerated motion. It's not a uniform motion. Why? Because the velocity is not remaining constant with time. Time is increasing, the velocity is also increasing. So if the velocity changes, it is a non-uniform motion. You all know this. But since the change in velocity is constant, it is a uniformly accelerated motion. From a velocity time graph, we can find out four quantities. चार to quantity निकाल सकते हैं. कोई एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं, मतलब टाइम और वेलोसिटी निकाल सकते हैं. और अगर हम लोगों को दो पॉइंट मालूम है, उन दोनों के बीच में अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? We all know this, right? So acceleration is equal to slope. If I take 2 points, say T1, T2, the velocity is v1 and v2. The slope is given by y2 minus y1 by x2 minus, so that is v2 minus v1 by v2 minus t1. Alright? So the slope is basically derivative of the y-axis quantity with respect to x-axis quantity. Okay? And displacement is another quantity that we can find out by finding out area under the graph. Under the graph. So area क्या है? Say if I take out this area, then it will give us half into sum of the parallel sides, माने P1 plus P2 into V1 plus V2 into the perpendicular distance between them, that is P2 minus, that will give you the area under the curve, and area of the curve will give you the distance. Look, displacement, change in displacement. The displacement from T1 to T2 time. T1 to T2 time में मतलब displacement होता है वैसे रहे. ठीक है? So this is all about VT graph, of different shapes of VT graph. VT graph है different shapes. Say this is VT graph and the graph is parallel to time axis. What does this depict? Means what motion? Uniform motion. VT graph. अच्छा এটা এই গ্রাফটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? Uniformly accelerated motion. So if you have a graph like this, uniform retardation. Retardation means speed is decreasing. With time, speed is decreasing. That's why it is retardation. Yes, sir. Next, if you have a graph like this, what does it depend? Yes, it is a non-uniform acceleration. But what about the non-uniformity? So this is increasing acceleration. Increasing acceleration. Why? Because had it been constant acceleration, it would have been straight line graph. तो straight line पे velocity जितना बढ़ता, ये curve के लिए velocity और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब acceleration increase कर रहा है. Please concentrate. Next, अगर यही ग्राफ ऐसे होता तो it's still acceleration but it is decreasing acceleration. अगर हम लोग के पास एक ग्राफ है
जो ऐसे है, अगेन आप VT ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ क्या होगा? ये वाला नीचे वाला ग्राफ क्या होगा? Of course, it is retardation, but is it uniform retardation? Now, what is the non-uniformity? Increasing or decreasing? This is decreasing retardation. Decreasing retardation. This part is decreasing retardation. Why? Retardation अगर fixed होता तो ऐसे straight होता, मतलब पहले रुक जाता, लेकिन वो बाद में जाके रुक रहा है, मतलब जितना रिटार्डेशन होना चाहिए था उससे कम रिटार्डेशन हो रहा है, वो बाद में जाके रुक रहा है. Is that clear? And the last one, increasing retardation. What graph will it shall it be? जहाँ पर रुकना चाहिए था उससे ज़्यादा जल्दी रुक जाता है. Increasing retardation. Increasing retardation. Okay? It's a VT graph. Now, of course, you can project this up into our displacement time graph, and acceleration time graph is not that much in use, but still, you can do that. Tell me displacement graph, ST graph, straight line. What does this depict? Velocity zero, body at rest. Body at time increase कर रहा है लेकिन displacement increase. So this is not uniform motion. This is body at rest. देखो shape एक same है. अगर मैं ये S निकाल के V बना देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? Uniform motion हो जाएगा. Rest ही था क्या? Uniform motion हो जाएगा. But as soon as I make it S, it is body at rest. You get a ST graph like this. Uniform motion. Why? Because the velocity is constant. Every interval, constant interval of time, the displacement is constant. So this is uniform motion. Okay? And if you have a graph like this, increasing velocity, accelerated motion. Is that clear? Get a graph like this. Get a graph like this. Retardation. Retarding motion. Is that clear? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. डिस्टेंस और इधर क्या है? टाइम है. एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो ऐसे दिया हुआ है. क्या नहीं? लास्ट वाला पार्ट. ये नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता. वो इंक्रीज कर सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, कभी डिक्रीज. डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता. ठीक है? तो इसलिए A to B body was in motion, B to C body was at rest, C to D impossible because it's a distance time. लेकिन अगर ये distance time नहीं तो displacement time होता तब वो possible होगा, क्योंकि displacement कर सकता है, मतलब वापस उल्टा direction में आ. Is that clear? These are the basic concepts. Apply them and try the questions. Whatever doubts you are having, we'll discuss.
হ্যাঁ ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ না ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ হবে হ্যাঁ হতে পারে একদম হতে পারে। মানে প্রথমে যদি আমি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ ইনক্রিজিং আর ডিক্রিজিং তৈরি করি প্রথমে ওটা কি হচ্ছে প্রথমে রিটার্ডেশন হচ্ছে তারপরে পেছন দিকটা যেটা সেটা ব্যাকে আসছে মানে উল্টো দিকে ফেরত আসছে বুঝতে পারছো আচ্ছা displacement time graph of a body thrown vertically upwards acha velocity time graph displacement time graph velocity time graph of a body thrown vertically upwards vt graph body thrown vertically upwards why because initially you throw with a certain velocity as it goes up the velocity decreases at the maximum height the velocity becomes zero और फिर जब नीचे गिरता है तब वेलोसिटी नेगेटिव में चला जाता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है बट इंक्रीज करता है दैट्स व्हाई वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस ऑब्जेक्ट shown vertically upwards না হ্যাঁ এটা এই জিনিসটা যদি স্পিড টাইম গ্রাফ হতো had it been a speed time graph velocity time graph नाम है speed time graph होतो ताले it would have been like this क्या ना speed टा negative दिख रहा है speed is the magnitude of velocity ताले speed time graph होले एरकम कोडे that will be all for today.